बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 10। हाउ वाज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट? I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature. After her winter's sleep, I feel the delightful, velvety texture of a flower and discuss its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me. Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. I am delighted to have the cool water of a brook rush through my open fingers. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. To me, the pageant of season is a thrilling and unending drama, the action which streams through my fingertips. So ये था पैराग्राफ की रीडिंग। अब हम पढ़ते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग। डेलिकेट, नाजुक, ब्रेकेबल और यू कैन से फ्रेल। सिमेट्री, तनासुब या बनावट। बैलेंस और यू कैन से ऑर्डर। स्मूथ, हमवार, इवन और फ्लैट। सिल्वर, चांदी, नकरी means to say white. Rough, khurdra, uneven, unregular. Shaggy, वहीदार means बालों वाला, जड़ी बूटियों वाला। Hairy और you can say woolly. Bark, दरख्त की छाल। Cover और you can say fill. Pine, चीड़ का दरख्त, it is the name of a tree. Bud, Compal, leaf or you can say petal. Delightful, dilkash, musarrat amez means pleasing. Texture, banawat or you can say tarkib. Shape, discover, daryaft karna, find out or uncover. Remarkable, mumtaz, numaya, extraordinary or you can say exceptional. Convolutions, पेचोखम इनके बलदार कह सकते हैं, लुपेट और सिनोनिम है कॉम्प्लेक्सिटी। मिराकल, मोज़ा, मार्वल और यू कैन से वंडरफुल। ओकेजनली, कभी कभार, समटाइम। फॉर्चुनेट, किस्मत वाला, लकी और ब्लेस्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वीवर, कपकपाना, शेक और ट्रैम्बल। स्पॉन्गी, खानेदार। थॉर्नी और यू कैन से रफ। लग्जरियस, पुर आसाइश, ग्रैंड, एक्स्ट्रावेजेंट। पर्शियन, ईरानी, ऑफ पर्शिया। रग, दुस्सा मीन्स कारपेट, कालीन जिसे हम कह सकते हैं। पेजेंट, पुरशकू मंजर या तमाशा, स्पेक्टाकल और यू कैन से डिस्प्ले। थ्रिलिंग, जोशीला, हिजान खेज, एक्साइटिंग। अनएंडिंग, ना खत्म होने वाला, अनलिमिटेड और यू कैन से अनबाउंड। स्ट्रीम्स, नदियां मीन्स क्वीवर और यू कैन से ब्रूक। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हमने पढ़े। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। हाउ वाज इट पॉसिबल, ये किस तरह मुमकिन था। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा।
हेलन केलर कह रही है कि मैंने खुद से पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है टू वॉक फॉर एन आवर इन द वर्ड्स के 1 घंटे तक जंगलों में घुमा फिरा जाए एंड सी नथिंग वर्थी ऑफ नोट, और कोई काबिल तवज्जो चीज न देखी हो। हाउ वॉज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, टू वॉक फॉर एन आवर इन द वर्ड्स एंड सी नथिंग वर्थी ऑफ नोट। मैंने खुद से पूछा ये किस तरह मुमकिन था कि 1 घंटा तक जंगलों में घुमा फिरा जाए और कोई काबिल तवज्जो चीज न देखी हो। आई हु कांट सी, मैं जो कि देख नहीं सकती, फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें पा लेती हूँ। थ्रू मेयर टच, महज अपने लम्स के जरिए, इनके अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए, अपने सेंसेस के जरिए। I who can't see find hundreds of things to interest me through mere touch, जो कि मैं देख नहीं सकती, महज अपने लम्स के जरिए दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें पा लेती हूँ। यानी कहती मुझे नजर नहीं आता लेकिन फिर भी मैं सिर्फ टच करके कई चीजें वहां से फाइंड आउट कर सकती थी, तलाश कर सकती थी। I feel the delicate symmetry, मैं लतीफ साख्त को महसूस करती, इनके नरम और नाजुक बनावट महसूस करती, किस चीज की, ऑफ अ लीफ, पत्ते की। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मैं पत्ते की लतीफ साख्त को महसूस करती। आई पास माई हैंड्स लविंगली, मैं बड़े प्यार से अपना हाथ फेरती हूँ। ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च, सिल्वर बिर्च के दरख्त की हमवार छाल पर। और द रफ शेगी बार्क ऑफ अ पाइन, या सनोबर के दरख्त की लंबी और खुरदरी छाल पर। यानी कि वो अपनी बाकी सेंसेस को यूज करते हुए किस तरह से जंगलात में से अपने इंटरेस्टिंग चीजों को फाइंड आउट कर रही है। आई पास माई हैंड्स लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च ऑन द रफ शेगी बार्क ऑफ अ पाइन, मैं सिल्वर बिर्च की दरख्त की हमवार छाल या सनोबर के दरख्त की लंबी और खुरदरी छाल पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली, इन स्प्रिंग मीन मौसम बहार में मैं बड़ी उम्मीद के साथ दरख्तों की शाहों को छूती हूँ। इन सर्च ऑफ अ बर्ड, किसी शगुफे की तलाश में, किसी नई कॉम्पल की तलाश में, किसी नई निकलने वाले पौधे की तलाश में। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, जो कि फितरत से आगाही की पहली अलामत है। आफ्टर हर विंटर स्लीप, मौसम सरमा की नींद के बाद। यानी कि वो कह रही है कि नई कॉम्पल का निकलना, नए शगुफे का निकलना, ये बहार की अलामत है जो कि विंटर के बाद आती है। In spring, I touch the branches of trees hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. मौसम बहार में किसी शगुफे की तलाश में बड़ी उम्मीद के साथ दरख्तों की शाहों को छूती हूँ, जो कि मौसम सरमा की नींद के बाद फितरत से आगाही की पहली अलामत है। I feel the delightful velvety texture of a flower. मैं फूल की खुशगवार महमली बनावट को महसूस करती हूँ। वेलवेटरी टेक्सचर मीन महमली बनावट, यानी कि नर्म और नाजुक। एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कॉन्वोल्यूशन, और इसकी नुमाया खमदार तहों को तलाश करती हूँ। एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर, और फितरत के किसी मौजज़े का इज रिवील टू मी, मुझ पर ज़हूर होता है। I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolution, and something of the miracle of nature is revealed to me. मैं फूल की खुशगवार महमली बनावट को महसूस करती हूँ और इसकी नुमाया हमदार तहों को तलाश करती हूँ, और मुझ पर फितरत के किसी मौजज़े का ज़हूर होता है। Occasionally, if I was fortunate, कभी कभार अगर मैं खुशकिस्मत हूं तो क्या होता है, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, तो मैं छोटे से दरख्त पर प्यार से अपना हाथ रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्वीवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग,
और भरपूर आवाज़ से गाते हुए परिंदे की खुशगवार थरथराहट महसूस करती हूँ। यानी कि वो अपनी बाकी सेंसेस को यहाँ पे यूज़ कर रही है, अपनी जो है विजुअल ऑडिटरी को यूज़ कर रही है, सेंस को यूज़ कर रही है। इसके अलावा वो अपनी टच करने की जो सलाहियत है, जो हिस्स अल्लाह ताला ने दी है, उसको यूज़ कर रही है। इसके अलावा जितनी भी सेंसेस थी उनको यूज़ करने की कोशिश कर रही है। Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. कभी कभार अगर मैं खुशकिस्मत हूँ तो मैं छोटे से दरख्त पर प्यार से अपना हाथ रखती हूँ और भरपूर आवाज़ से गाते हुए परिंदे की खुशगवार थरथराहट महसूस करती हूँ। नेक्स्ट लाइन है, I am delighted to have the cool waters of a brook. नदी के ठंडे पानी को बहते हुए पाके मैं खुश हो जाती हूँ। Rush through my open fingers, अपनी खुली उंगलियों में से। I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. नदी के ठंडे पानी को अपनी खुली उंगलियों में से बहते हुए पाके मैं खुश हो जाती हूँ। To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass. मेरे नज़दीक एक सनोबर के नोकदार सरसब्ज़ पत्तों का कलीन या मुलायम घास is more welcome than the most luxurious Persian rug. एक इंतहाई पुरतैश यानी कि पुरसाइश ईरानी कलीन से ज़्यादा खुशगवार है। यानी कि वो कहती है कि पाइन ट्री या स्पोंगी ग्रास जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मुझे ज़्यादा खुश करता है एज़ कम्पेयर टू पर्शियन रग के, ईरानी कालीन के। टू मी अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पोंगी ग्रास इज मोर वेलकम दैन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग। मेरे नज़दीक एक सनोबर के नोकदार सरसब्ज़ पत्तों का कलीन या मुलायम घास एक इंतहाई पुरतैश ईरानी कालीन से ज़्यादा खुशगवार है। To me the pageant of seasons is, मेरे नज़दीक मौसमों का पुरशकू मंजर यानी कि चेंज होता हुआ मंजर is a thrilling and unending drama. एक वल्वला अंगेज लामतनाही ड्रामा यानी कि खेल है। The action of which streams through my fingertips, जो अमली तौर पर मेरी उंगलियों के पोरों से गुजर कर जाता है। To me, the pageant of season is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. मेरे नज़दीक एक मौसम का पुरशकू मंजर एक वल्वला अंगेज लामतनाही ड्रामा है जो अमली तौर पर मेरी उंगलियों के पोरों से गुजर कर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश करते हैं। How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note? Helen Keller asks herself if it is possible to walk in the jungle and see nothing charming. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. She says, though she is blind, she can find just by touch many things that attract her. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे वर्ड्स को हमने आसान किया और इसकी सिंपल इंग्लिश हमने की। नेक्स्ट है I feel the delicate symmetry of a leaf. तो सिंपल इंग्लिश है she can touch and enjoy the fine delicate surface of a leaf. I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है she says that she enjoys passing her hand gently over the flat skin of silver birch and coarse hairy hide of a pine tree. In spring, I touch the branches of trees hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि इन द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन शी passes her hand lightly over the twigs of trees. She hopes to find a bird,
The bird indicates the beginning of spring season and the end of winter season. Next line है, I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolution, and something of the miracle of nature is revealed to me. So simple English is, she says that she enjoys touching the soft silky surface of a flower and notates its mean twists and curves. Thus nature displays her beauty in the most wonderful way. Next line है कि occasionally if I am fortunate I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. तो occasionally के लिए word use हुआ at times. By some lucky chance she touches a sapling with a singing bird sitting in it and feels the delightful shaking of the bird's wings as it flies away. Next line है कि I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. So Helen Keller says that she puts her hand with her open fingers against the flow of water in a stream and feels the cool flow of water through her open fingers. Next line है, to me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, she likes the carpet made of needle shaped leaves of pine or soft grass than a comfortable Persian mat. Last line है, to me the pageant of season is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. So she says that every change of season is a display of colors and everlasting beauty. She says that every change is like an exciting drama for her, and she sees every action with her fingertips. तो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 10 की सिंपल इंग्लिश भी कंप्लीट होती है। अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन का मुताला करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज? खत कुशीदा मुरक्कब नाकिस से क्या मुराद है, यानी कि जिसको अंडरलाइन किया गया है जिस फ्रेज को, उसका क्या मीनिंग निकलता है? तो उसका आंसर है, अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा मीन्स द कॉन्टिन्यूअस साइकिल ऑफ सीजन्स। सनसनीखेज और ना ख़त्म होने वाले ड्रामे से मुराद मौसमों का मुसलसल चक्कर है, मुसलसल उसमें तब्दीली है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 10 अपने अख्ताम को पहुँचता है।